will not waste our time. Okay. Chalo, in the previous class, I had explained you how to find complements of a number. Okay. We had seen how to calculate r's complement and r minus 1's complement. For decimal numbers, we calculated 10's complement and 9's complement. And for binary numbers, we found 2's complement and 1's complement. Now, we had seen the method to calculate r's complement. We had seen both through formula as well as through shortcut method. For r's complement, the formula for n number not equal to 0 was r raised to small n minus capital N, where n stands for number of digits in the integral part. And for n equals to 0, my complement would be 0. Okay, r's complement would be 0. For r minus 1's complement, see, I'm revising these concepts because we are going to use it now. Okay. Today we are going to study how to carry out subtraction using complements. So we should be knowing these things. Chalo, r minus 1's complement, what was the formula? R raised to n minus r raised to minus m minus capital N, where n is the number of digits in the integral part and m is the number of digits in the fractional part. Okay, so only one formula was there for r minus 1's complement. So these were the two formulas which we studied. R is the base, small n is the number of digits in the integral part and capital N is the original number. Okay, जिसका आपको complement find करना है. Shortcut method for finding 9's complement. Subtract each digit from 9. याद है ना कि भूल गए? चलो, tell me 10's complement. How do we find 10's complement? Yes, 9's complement plus 1. Add 1 to 9's complement. Very good. Shortcut method for 1's complement. Ma'am, how question के answer बता दो ना. What? How? Homework question के answer कौन से homework दिए थे? I don't remember. वो complements find करने को दिए थे मैंने आपको. वैभव एडिंग इन बेस 12 तो कब का खत्म हो गया? मैंने वो करवाया था ना, वो एड एंड मल्टीप्लाई. I had someone was facing problem in base 12 calculation ना. In your class was मैंने कल सिखाया था, आपकी क्लास में ही सिखाया था ना, बेस 12 का मल्टीप्लिकेशन. मैम कल हमारा प्रैक्टिकल नहीं, परसों प्रैक्टिकल था, कल तो हमारा क्लास शायद से नहीं था. तो आपकी क्लास में मैंने उसका आंसर नहीं बताया बेस 12 मल्टीप्लिकेशन का. समवन वाज फेसिंग प्रॉब्लम. ओके, आई लेट यू नो. एक मिनट. हाँ, पहले मैं ये थोड़ा कंप्लीट कर दूं एंड देन आई गेट बैक टू दैट. One's complement, you just have to flip the bits. Okay, and 2's complement, shortcut method. One method is 1's complement plus 1, but 2's complement में shortcut method में हमने क्या देखा था? Till you get the first one from the right hand side, that is from the least significant bit, keep the bits as it is. यहाँ पे पहला 1 मिला तो यहाँ तक as it is, and remaining bits flip them. Understood? So this was the shortcut method for finding 2's complement of any number. Clear? चलो. Now, yes, you are facing किसमें problem है आपको? पहले answers चाहिए कि problem है किसी में? Multiplication वाला? You want answers? Okay. I had given you 3 sums. First का answer
सेकेंड का आंसर एंड थर्ड आंसर. Chalo, any doubt in any of these? These are the answers to the 3 questions which I had given you. Addition and multiplication with different bases. Okay? जिसने किया होगा, they will be able to verify. The ones who have not done, please do ignore. It means you are not interested in studying. Okay, chalo. If any one of you have any doubt, I can explain you. कैसे आया? And if you have done it, very good, we'll be moving ahead. Shall I move ahead? I want yes from all of you. Okay, good. Chalo, so now we have recalled all the methods for finding complements. Now, next, see, generally subtraction we carry out using borrow method and all. But in computers, in digital systems, instead of borrow, they follow finding complements and addition procedure. Instead of taking borrow, that is a bit difficult process. So, how is subtraction carried out in computers? Using complements. Okay. We will be studying subtraction. Again, subtraction is carried out using 2 ways, either using r's complement or by using r minus 1's complement. Which type of question can be asked to you? Question can be asked, carry out the following subtraction 453 minus 261 using 10's complement. Yeah, carry out the following subtraction using 9's complement method. वैभव क्या पूछ रहे हो मैम क्वेश्चन 3 बता दो ना. When I asked you problem है तब बोलना चाहिए ना. Now when I'm going ahead you are saying कि उसका आंसर बताओ. In the last 5 minutes remind me, okay Vaibhav? I'll tell you. I'll explain how to carry out that multiplication in the last 5 minutes. Remind me at that time. Chalo. Yes, so when decimal numbers are given to you, you may be asked to find it using 10's complement or 9's complement. Again, if it is said that numbers given to you are in decimal, and you may also be asked to find it in using 2's complement and 1's complement. So in that case, you have to first convert the number to its equivalent binary, because we know that 2's complement and 1's for 2's complement and 1's complement, your question, your number should be in base 2. ठीक है? तो generally numbers ये जो पूछे जाते हैं, the numbers given to you for subtraction would be in decimal for 10's complement and 9's complement, and it would be in binary for 2's and 1's. Okay? So now we'll be studying these two methods using r's complement and r minus 1's complement. So let us start. First, I'll write the procedure and then we will understand that procedure through an example. First, we are going to study subtraction using r's complement. First of all, you should be knowing कि अगर मैं दो numbers को subtract कर रही हूँ, m minus n. Okay? The m over here is known as minuend. And n is called subtrahend. जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको माइन्यूएंड कहते हैं और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज सबट्राहेंड. ओके, इन शॉर्ट द नेगेटिव नंबर ओवर हियर इज योर सबट्राहेंड. क्लियर? So if I want to carry out subtraction of two numbers given to me using r's complement, you will be following these steps. First step is equate the number of digits in both the numbers. Like if first number is 456 and the second number is 64, what you will have to do? How would you equate the number of digits here? बताओ. Number of digits इसमें 3 है, इसमें 2 है. कैसे equate करोगे? Yes, you have to make this 064.
Clear? So that is the first step. Second step is find r's complement. अभी हम r's complement method पढ़ रहे हैं. We are doing subtraction using r's complement. So find r's complement of the subtrahend. यानी मुझे जिसको subtract करना है उसका मैं क्या करूंगी? I'll be finding the r's complement. After that, add it to minuend. यानी n का पहले r's complement find करो. Whatever answer you get, add it to your m. यानी ये मेथड में एक्चुअली हुआ क्या? We first calculate the complement and then we are doing adding. Okay, so we are not carrying out subtraction. We are calculating complement and then adding it to your minuend. ठीक है, चलो add it to minuend. Next, जो भी आंसर आपको मिला, if you get a carry, कैरी यानी if the number is a 3-digit number और अगर आपको आंसर 4-digit में मिलता है, so that fourth one is your carry. Okay, so if you get a carry, ignore it, and that would be your answer. Remaining part would be your answer. And if you do not get a carry, तो क्या करना पड़ेगा? अगर कैरी मिलती है तो कैरी को इग्नोर कर दो एंड यू गेट योर आंसर. बट इफ यू डू नॉट गेट अ कैरी, अगेन फाइंड r's complement of that particular number and place a negative sign, and that would be your answer. यानी अगर कैरी नहीं मिलती है तो आपका आंसर नेगेटिव होगा, अगर कैरी मिलती है तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा. ठीक है, कैरी, इफ यू फाइंड अ कैरी, अगेन टेक द r's complement और उसके आगे एक नेगेटिव साइन डाल दो तो वो आपका आंसर होगा. व्हेन आई राइट द स्टेप्स, अभी आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, सबट्राहेंड नहीं. यू हैव टू फाइंड अगेन फाइंड r's complement ऑफ द आंसर. जो आंसर आपको इधर मिला, आंसर इसकी बात कर रहे हैं हम. इस आंसर में अगर कैरी आई तो उसको इग्नोर कर दो एंड रिमेनिंग पार्ट वुड बी योर आंसर. और इसी अगर कैरी नहीं मिली तो इसी आंसर का वापस आपको r's complement करना है. ओके सहज? चलो, now let us see, understand this through an example and then it would be more clear. Let us take two numbers. My m is and my n is ठीक है. I am asked to carry out calculation like this, 72532 minus 3250. मुझे ऐसा करने को, ये वाला subtraction करने को बोला है, and that I am asked to do using tens complement. This is base 9, ये आपका sorry base 10. This is your decimal number. Okay, चलो, let us carry out the first step. First step में क्या करना है? Equate the number of digits. तो मेरा m क्या बनेगा? 72532 and my n would be 03250. चलो, what is the next step? Find r's complement of n. What is my r's complement of n? तो इधर हमें r's complement करना है, तो r's complement यानी tens complement of n is equal to, quickly tell me through shortcut method, what would be tens complement of n? जल्दी क्या करेंगे? टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 9 एंड ऐड 1 टू इट. 96749 plus 1. So what is tens complement of 9? 96750. ठीक है, वैभव 49 नहीं 50. You have to add 1. अगर 49 96749, that would be 9's complement. ठीक है, चलो, what is the third step? Add this tens complement of n to your m. So मेरा m क्या है? 72532 and tens complement of n is 96750. इसको ऐड करो, एडिशन तो हम सबको आता है.
What did I get? 169282. What is 1 over here? 1 is the carry. So if you get a carry, just ignore it and your answer would be 69282. Understood? Is it simple? चेक करो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हम सबको आता है 72352 minus 3250. Check whether you are getting the same answer. मैंने कुछ गलत लिखा 72532. It's not 7. Yes. So answer is same. Fine. So this is the normal borrow वाली procedure that we मैम do. हाँ वहाँ पे +1 क्यों किया? हाँ +1 किया बेटा. दिस इज 9th कॉम्प्लीमेंट. हमें अभी कौन सा प्रोसीजर पढ़ रहे हैं हम? अभी हम पढ़ yes रहे yes हैं 10 कॉम्प्लीमेंट. 10th सॉरी कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, इसलिए 10th कॉम्प्लीमेंट मैंने ऐसे हाँ टाइप उसमें किया. +1 करने का. हाँ 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 ठीक है. अभी अपना जो सब्ट्रैक्शन हम सीख रहे हैं, दिस इज सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट. ओके. सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द प्रोसीजर? Calculate the tens complement of the subtrahend, add it to your minuend. If you get a carry, ignore it, else the remaining part is your answer. Okay? चलो अब एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. 3250 minus 72532. चलो टेल मी. My m is 3250, n is 72532. क्या करेंगे? इक्वेट द डिजिट्स. ठीक है. अब what will we have to do? Find tens complement of n. क्या होगा tens complement of n? बताओ जल्दी. क्विकली. शॉर्टकट पता है हमें. टू 27467 plus 1. 27468. Yes. Now we have to add this to m. तो अब क्या करेंगे? 03250 plus 27468. चलो बताओ क्या आएगा सम. Did you get 30718? All of you? Yes. Here no carry. ये भी 5 डिजिट का नंबर है. So what we have to do? If you do not find a carry, again take tens complement of 30718. क्या होगा tens complement of 30718? 69282. So take tens complement of the answer and place a negative sign in front of it. So this would be your answer. मिल गया सेम आंसर ऊपर जैसा. 30718 का टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे किया हमने? 69281 plus 1, 69282. Clear? Did you understand the procedure? First हमने कैसा एग्जाम्पल देखा? We saw an example which had one carry. So in that case we simply ignored the carry. Here we did not get a carry, no carry. So what we had to do? We had to take tens complement again, and that would be your answer. Okay. So this is r's complement method. अब ये तो डेसिमल के लिए देखा, ऐसा बाइनरी के लिए भी सेम प्रोसीजर वुड वर्क. Let us quickly take an example for binary numbers. Same procedure. This is m minus n. अगर ये एक कम होता तो zeros ऐड करके equate the numbers. Okay. चलो now what we need to do here, r's complement यानी 2's complement. ठीक है. 2's complement of n is, क्या करेंगे 2's complement तो डायरेक्ट
0 0 1 एज इट इज, और पीछे वाले सभी फ्लिप कर दो. राइट. ओके. नाउ एड दिस टू m. m मेरा है 1 0 1 0 1 0 0. उसके अंदर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा, ऐड करो. 1 plus 1 is 10. 1 plus 1 is 10. 1 plus 1 is 11. 11 नहीं, हम 1 2 3. 3 is 1 1. ओके. 1 plus 1 मैंने गलत लिखा. यू हैव रिटर्न 4 ones. बेटा 4 ones तो आएंगे, ये 3 एज इट इज रहेंगे, और पीछे 3 zeros जो होंगे वो 3 1 बन जाएंगे. ओके. हाँ थी, मैं खो गई अब. हाँ, 1 plus 1 plus 1 is 11. 1 plus 1 is 10. 1 plus 1 is 10. चलो ये आया. This is my carry. So ignore it and this would be my answer. So my answer is 1 0 0 0 0. Ignore the carry part. ठीक है. Understood? हाँ कि ना? Good. Let us move ahead. मैम अगर हाँ. अगर उसमें सिर्फ कैरी हो नहीं होता तो फिर हाँ. हम लोग वो 10 कॉम्प्लीमेंट और 9 कॉम्प्लीमेंट बताती कैसे हूँ. करते वन ना? सेकेंड एग्जाम्पल. क्विकली सेकेंड एग्जाम्पल. कैरी नहीं है, चलो m इज दिस, उल्टा ले लिया मैंने, एंड n इज दिस. क्विकली, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n. n का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 0 1 तक एज इट इज, और फिर फ्लिप करो. सो दिस इज माई टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n. इसको मैं क्या करूंगी? m में ऐड करूंगी. व्हाट इज माई m? 1 0 0 1 0 0. टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n. 0 1 0 1 1 0 0. चलो ऐड करो, चेक करो. Are you getting a carry over here? 1 1 4 times 0. No carry. So what will we do? What will we do quickly? Carry nahi hai. So take the 2's complement again of this number. Is 1 2 3 4 1 as it is, और पीछे वाले दो को flip कर दो. This is the 2's complement of ये. And what would be my final answer? Place a negative sign. ये जो मुझे नंबर मिला, इसमें मैं नेगेटिव साइन डाल दूंगी. दैट वुड बी माय फाइनल आंसर. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ओके फाइन. चलिए मूव अहेड. अब r-1 सिखा दूं. दिस वाज r's कॉम्प्लीमेंट. ओके. Subtraction using r's complement. Now we'll see. See, there are a number of exercises given in your textbook. Please try to solve them. ये तो मैंने दो ही एग्जाम्पल करवाए आपको. 2 for tens nines, 2 for 2 for tens complement, 2 for twos complement. बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए क्वेश्चंस. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट आउट. ओके. अब हम सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग r-1's complement. चलो, फर्स्ट स्टेप
Same, equate the number of digits. There is only one small change. Equate number of digits is the first step. Second step is find r minus 1's complement of subtrahend. Third, add it to minuend. इतना सब सेम है, सिंपली आर्स कॉम्प्लीमेंट की जगह r minus 1 किया. If you get a carry, ignore it. ना, if you get a carry, ignore it किसमें था? In r's complement. Here you will not ignore it. If you get a carry, add it to your answer. यानी अगर आपका ये आंसर आया इधर, ठीक है, और यहाँ पे एक कैरी है, तो इस कैरी को आप क्या करोगे? उठा के इधर डाल दोगे, और ये जो वैल्यू है ना, इसके साथ इस कैरी को ऐड कर दोगे, and whatever you get over here is your final answer. Understood? In r's complement, we were ignoring this part. In r minus 1's complement, we will add this one over here. And here what you get would be your answer. If no carry, again, take r minus 1's complement of answer and place negative sign. So only one change here in this step. ठीक है, बाकी everything will remain same. The only thing is instead of r's complement, you have to take r minus 1's complement. Shall we see the example? Procedure पता चली? हो गए वापस सब. Disappeared. Be active. Please respond. Otherwise मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेली बोले जा रही हूँ. Let us take the same example. But now we have to do it using 9's complement. ऊपर we did it using क्या था? 10's complement. Here we will be doing it using 9's complement. Quickly, m is 72532. N is 03250. Equate the number of digits. अब मुझे क्या करना है? Find 9's complement of n. It would be simply subtract each digit from 9. 96749. Very good. अब क्या करेंगे? Add it to m. ये कौन है? पीछे 2 क्यों आया? मैंने गलत किया कहीं? Yes. 69281, or this is the carry. Okay, so what we will do is we will take this carry over here. यहाँ से carry हटा देंगे, इस carry को इधर ले लेंगे और add कर देंगे. So what will we get? This is my final answer. Understood the procedure? Instead of ignoring the carry, what you have to do is you have to add it to your final answer. ठीक है? चलो next example. हम एक मिनट हो रहे हैं ना स्लाइड से. एक मिनट, ऊपर वाला देखना है. यस मैम.
Done? Yes, ma'am. Okay. Moving ahead. चलो. Carry out this subtraction using 9's complement. तो मेरा m होगा 03250. n is 72532. सबके हाथ चलने चाहिए. All of you, I want all these sums to be written in your notebook. थ्री 30717 नो कैरी. इसलिए आंसर क्या होगा? अगेन टेक 9's complement. So 9 minus 7 is 2, 9 minus 1 is 8, 2, 9 minus 0 is 9, 9 minus 3 is 6, minus, and place a negative sign. This is your final answer. सिर्फ आंसर लिखना in the chat window is not important, हाँ? यश, do you want to annotate my screen? मेरे स्क्रीन पे कुछ लिखना है तो मैं अप्रूव करूँ. यशराज, you have requested for annotating. Do you want to do something? Okay. Chalo. So yes, what I was saying is just writing the final answer is not important. Here process के marks है. ठीक है? You should know the actual procedure. मैं direct यहाँ पे ये वाला subtraction normal calculator से हमारे normal arithmetic logic से कर सकती हूँ. 3250 72532 minus 3250 करो, जो आंसर आता है नेगेटिव डाल दो. Fine, but here this procedure is important. You should be knowing this. ये आप हम नॉर्मल कैलकुलेटर से करें, दैट कैन बी डन एट द लास्ट फॉर जस्ट वेरिफिकेशन ऑफ अवर आंसर कि हमने जो आंसर मिला. कैन वी यूज शॉर्टकट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट एवरीवेयर? यस, यू हैव टू यूज शॉर्टकट ओनली, वरना पूरा फॉर्मूला इधर लगाओगे तो यू इट वुड टेक टू मच ऑफ टाइम जस्ट टू कैलकुलेट दिस. ओके, सो व्हेन वी आर डूइंग फॉर सब्ट्रैक्शन, when we are doing subtraction using complements for subtraction, use your shortcut method only. Okay, otherwise it would take too much time. चलो, अब ये हमने क्या किया? 9's complement. अब let us see 1's complement. Whether you carry out subtraction using 9's complement, आप 10's complement से करो या 9's complement से करो, आंसर तो सेम ही मिलना चाहिए. Similarly, the same example I am taking, हमने पहले 2's complement we have already studied. Now we are seeing how to do it using 1's complement. Okay, चलो. Both the answers would be same, the procedure would differ. 1's complement of n क्या होगा? Just flip all the digits. इसको क्या करेंगे? हम m में ऐड करेंगे. मैं हर बार लिख रही हूँ एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी ऐसा लिखोगे. ठीक है, ये हमने किसमें क्या ऐड किया? Did you get this? You're getting a carry, right? So add this carry over here. So your answer is 1 and 4 times 0. Did you all get it? समझ में आया सबको? Okay, fine. One last example.
जो मैं करूंगी बाकी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने को दूंगी, ठीक है। दिस इज माई m, this is my n, carry out the subtraction using one's complement. फटाफट, one's complement of n is 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। इसको हम m में ऐड करेंगे। Did I get any carry? No carry. So my answer is going to be negative और इसका one's complement क्या होगा? Flip all the bits. Did we get minus 1 0 0 0 0 as the answer? Okay, so we saw both the methods in which one example was where we got carry and second example was where we didn't get a carry. Okay. Any doubt in these two procedures, subtraction using r's complement and r minus 1's complement? See, generally in computers, when we say complement, complement generally refers to one's complement. ठीक है। हम अभी देखते हैं उसका वो कंपैरिजन भी, बट बिफोर दैट आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स टू सॉल्व क्विकली। सॉल्व इट एंड राइट द आंसर इन द चैट विंडो। 2 नहीं, एक ही देती हूँ, मुझे एक और टॉपिक करवाना है आपको। चलो फटाफट राइट द, टेल मी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सीधा आंसर मत लिखना, मुझे पता है आप सब एक्सपर्ट्स हो मैथ्स में। 20 minus 1000, solve it using tens complement. जल्दी। क्या करेंगे? सबसे पहले 0 0, फिर इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000? कौन लिख रहा है 0980? कौन लिख रहा है 979? आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट पे अटक गए। वी हैव टू फाइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट and place a negative sign, so this would be your answer. Okay, don't write 980 in it. Your answer is minus 980. Chalo, so I hope you have understood these procedures, the procedure for finding, carrying out subtraction using complements. Now that, chalo, last concept to be taught for complements. See, ध्यान से सुनो, okay? I want this to be an interactive session, last 10 minutes. All of you have, we all have studied 2's complement and 1's complement. ठीक है, मैंने आपको सिखाया how to find 2's complement, how to find 1's complement. We also saw how to carry out subtraction using 2's complement, how to carry out subtraction using 1's complement. Now my question is, which one did you find it better? Anyone unmute and let me know. Which one did you find better, 2's complement ki 1's complement? Unmute करके आंसर बताओ। मैम 1's complement. 1's complement. Who is saying? Vaibhav. Vaibhav, बताओ, why did you find 1's complement? 1's complement. मैम क्योंकि केवल बिट्स रिवर्स करना है। फिर से क्या?
मैम बिकॉज पूरे बिट्स ही रिवर्स करने बस डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन देख के Okay, भी here we just have to put the bit. इसलिए आपको ये easy लगा, right? हाँ मतलब सेकंड वाला भी इजी है पर Easy नहीं, I am Compare- asking one complement की two's complement. Which did you find better? वंस Once. Okay, चलो. Any other answer? टूज कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड करना भूल जाते हैं कई बार। तनय, you are saying कि two's complement में last में पीछे एक one add करना भूल जाते हैं. So that is creating problem and hence you are finding also one's complement better, right? चलो. Okay. Any other answer? Any other answer? Fine. चलो ये तो आपने मुझे क्या बताया? You people said that finding one's complement is easy. Okay, compared to two's complement. If I talk about subtraction, which subtraction is better? One's complement ki two's complement? Two's complement because क्या? two's complement. Two's complement. Okay, Mokshil. Can you tell me why you are saying that two's complement subtraction is better? He is saying two's complement का subtraction better है. Why? Means if we get a carry then वो one's complement में हमें वो पीछे ऐड करते सब आ जाए बाइनरी में बहुत लाइक थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है. Okay. So what he is saying that in two's complement, if I get a carry, I simply have to ignore it. But in one's complement, if I get a carry, I have to again add it. So if I talk about two's complement, it requires one arithmetic addition, whereas in one's complement, I require two arithmetic additions. पता चला? टूज कॉम्प्लीमेंट में मुझे एडिशन एक ही बार करना पड़ता है. Only one time you need to carry out addition process. Whereas in one's complement, अगर carry हुई तो you have to carry out the addition process 2 times. Addition के लिए जो भी आप gates ways use करो आपको 2 बार addition करना पड़ेगा. Fine. So in two's complement, only one addition. In one's complement, 2 additions, 2 arithmetic additions. Okay. Any other thing that comes to your mind for this subtraction? चलो, I'm giving you a quick task. मुझे ये करके बताओ. I'm giving you one subtraction. Do it using two's complement and do it using one's complement. Quickly and tell me what answer are you getting. मेरे 15 पेज भर गए, अब मुझे इंसर्ट करना होगा. Quickly, I want the answer. Tana is writing something. Tana is 0. दोनों में 0 मिल रहा है? No. (1100 minus 1100). सबसे पहले मैं टूज कॉम्प्लीमेंट लेके कर रही हूँ. ठीक है, चलो लेट मी सी. टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे? 1100 प्लस ये 3 एज इट इज रहेंगे और लास्ट वाला फ्लिप हो जाएगा. अब मैं इसको ऐड करूँ तो 0 0, दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 1 1, सो 0. दिस इज कैरी, सो इग्नोर इट एंड माय आंसर वुड बी 0 0 0 0. ठीक है, चलो अब लेट मी सी टू वंस कॉम्प्लीमेंट. 1100 प्लस टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, इट वुड बी 1100. इसको ऐड करो 1 1 1 1, नो कैरी. So again find one's complement and place a negative sign. क्या हुआ? Two's complement is giving me 0 0 0 0 and one's complement is giving minus 0 0 0 0. So there is a problem over here. Problem nahi, but one's complement, if I carry out subtraction using one's complement, it has 2 zeros in it. The zeros here are positive as well as negative. Whereas 2's complement में हमारे पास एक ही 0 है.
ठीक है, कोई भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे तो मुझे नेगेटिव 0 मिल रहा है. So I'm not saying which one is better, which one is not better. We are just comparing. ठीक है, 2's complement में we had 2 arithmetic additions. We are having a single 0, positive 1. In 1's complement, ये मैंने उल्टा लिखा, sorry. 2's complement में we have to carry out 1 arithmetic addition and a single 0, whereas in 1's complement we have to carry out 2 arithmetic addition and it has 2 zeros, negative as well as positive. So this may create complications. It may complicate matters, it can create problems. Understood? So for finding complements, yes, you are saying कि हाँ one's complement ढूंढना easy है, simply flipping the bits. But subtraction की बात करें तो in subtraction 2's complement is better. Why? Because it has single arithmetic addition required. And it does not have two different types of zeros, positive and negative. Clear? Chalo, so this was all about complements. One small exercise for you, घर पे कर लेना whenever you get time. Solve this using 2's complement and 1's complement, and solve this using 10's complement and 9's complement. Okay, two sums for your